बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अपने चैनल की तरफ से क्लास नंबर 8 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग 5 सेफ्टी क्वेश्चंस एंड आंसर्स रीड करेंगे। आवर क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास विल बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग, व्हाट आर द हैजर्ड्स इन वेल्डिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर पेंटिंग, व्हाट आर हैजर्ड्स एंड इंजरीज इन मैनुअल हैंडलिंग, and what precautions are needed to avoid accident in manual handling. So our first question for today's class, what is the cause of accidents in manual handling? किसी भी चीज़ को मैनुअल हैंडलिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें एक्सीडेंट का सबब बन सकती हैं? इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से ना उठाना। कैरिंग टू हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा वज़न उठाए रखना। इम्प्रॉपर ग्रिपिंग, किसी भी चीज़ को मजबूती से ना बांधना। फेलियर टू यूज़ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना करना। लिफ्टिंग ग्रीसी, ऑयली एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड पुअर फिजिक यूज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हैजर्ड्स इन वेल्डिंग? वेल्डिंग करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें ख़तरा साबित हो सकती हैं? आई इंजरी, burn injury, electrical shock, light radiations, heat, light and radiation effect, heat fume, poisonous gases, chipped price of world metal, fire, explosion scattering, noise sparking and flying sand. Our next question, what are the precautions for painting? पेंट करने के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं? नंबर 1, ऑल फ्लेमेबल मटेरियल्स शुड बी क्लियर्ड फ्रॉम द वर्क एरिया। द रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट्स मस्ट बी worn. Cartridge respirators shall always be worn. Adequate ventilation is necessary. Adequate washing facility must be readily available. Barrier cream should be applied to the skin. What are hazards and injuries in manual handling could be possible? Cutting fingers due to sharp edge, burn due to handling of hot articles, foot injuries due to dropped articles, slipped due to improper postures in lifting on objects, strain to wrist or fingers, sprains, wounds, hernias or fractures could be the hazards during manual handling. Our next and last question for today's class, what precautions are needed to avoid accident in manual handling? Stand at safe distance from the loading area. Sharp edged and burns are removed before lifting a materials. PPE such as safety gloves and safety shoes are to be used. If the weight is too heavy for one person to lift, then he has to seek the assistance. The pathway is not blocked by obstacles while carrying the load. The different actions, movements and force necessary while carrying the load. Modify the task by using hooks and crowbars. Mechanical equipments such as crane shall be used. Modify the objects. Change the way things are to be used. So guys, this was today's class number 8. I hope you will find at least something new in this class. Hope to see you soon in class number 9 with 5 new questions and answers. Lastly, I would like to humble request to share and subscribe my channel. Till that, take care. Allah Hafiz.